Technological advancement has really improved and streamlined our day-to-day activities, disrupting the status quo and making things available just our fingertips. We know now that smartphones dominate the world today. But do you know what is that factor that led to its growth, this incredible growth? The biggest factor is the development of mobile applications. Think about it. If your phone didn't have mobile applications, if you could not go and replace it with new ones, try out new things, just increase the power of your phone just by a new app, would you really have seen smartphones absolutely explode? You know, the app is everything. Apps have changed the way we travel, eat, shop, book a cab, and do so many more things. So an app is not just everything, there's also an app for everything. Now, the reason for the massive growth of mobile apps is twofold. One is that people love the ease of apps, right? And secondly, everyone always carries their smartphone with them. So now that we've established that an app is a super powerful thing, have you ever wondered who are the people who are actually developing these apps? How are they making sure that they get the right app? There are now millions of companies out there doing fantastic work on apps, and that leads to a new career opportunity for people to explore. Low cost of development and app stores that made publishing apps easy. App development quickly became a sought-after career. It's a hot career right now. And the credit of enriching our life goes to mobile applications that have brought about a drastic change. Apps have provided ample scope for developers to showcase their hidden talent and creativity. The mobile app industry has catapulted and gone beyond everybody's imagination. Another advantage of smartphones is that because of this very strong processors inside, one can learn how to code on their phones itself. Yes, no longer being sitting in front of a big screen, a huge giant supercomputer. Now people can make apps on the phone itself. And that's our guest for today. We met up with Pallav Parekh, an upcoming Android app developer. He learned how to develop apps on his phone when he was still in school. After completing his graduation in computer engineering, he decided to start working as an app developer and now develops apps for Android phones. His apps are available for download through the Google Play Store. The use of mobile phones in our everyday life has proved to be of utmost importance. Because of the ongoing transformation, mobile phones have now become more than just communication devices. Today, the increase of mobile applications for individuals and businesses alike has changed the way we experience life. Thanks to the rise of apps, there is now an increased need for app developers. We meet 22-year-old Pallav Parekh, an app developer and a coder. Pallav says it's not profession, rather passion for him. मैंने अब तक 4 ऐप बनाई है. उसमें सबसे पहली ऐप थी पर्सनल नोट, जो कि अभी प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है. Pallav learned coding and developing apps when he was in class 10. For him, self-learning was the key. He saw people around him developing Android apps, and it piqued his interest. He saw the growth of application development as there was an app for everything. फिर 12th में मैंने एंड्रॉइड ऐप बनाना सीख कर लिया और मैंने चालू किया उसको पब्लिश करना है. मैंने पहली ऐप बनाई पर्सनल नोट्स, वो मैंने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दी. पब्लिश करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. एक ही महीने में 1000 डाउनलोड्स हो गए, 1000 डाउनलोड्स ज़्यादा हो गए. अभी भी डाउनलोड्स आ रही है, अभी तक 10,000 हो गए डाउनलोड्स. तो जैसे एप्लीकेशन बढ़ते रहे तो मुझे भी हुआ कि चलो और बनाते हैं, कुछ और ज़्यादा बनाते हैं. While growing up, Pallav was demotivated on many opportunities for choosing an unconventional career. But he says his family's support kept him going. तो लोग पहले तो खुश हो गए कि ओ अब मेरा बेटा आईटी फील्ड में जाएगा, फिर वो कंप्यूटर फील्ड में जाएगा. क्योंकि अभी भी इंडिया में क्या है कि ओके कंप्यूटर फील्ड तो कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा वो बहुत ऊपर जाएगा. मुझे सब सपोर्ट किया, इनकरेज किया कि हाँ बेटा आप करो, अब शुरू तो करो एटलीस्ट. हर पेरेंट को लगता है कि अपना लड़का कुछ पढ़ाई में रस ले, पढ़ाई करे, उसका रिजल्ट अच्छा हो. और मोबाइल में रहता है और लैपटॉप में रहता है तो हर पेरेंट को लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है. फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो तो ऐप बना रहा है, वो कुछ कोडिंग कर रहा है, कुछ वेबसाइट में रिसर्च कर रहा है. तो मैंने लगा कि अच्छा है, वो तो आईटी में जा रहा है तो खूब अच्छी बात है, खूब बढ़ेगा वो. तो मैं अब देख रहा हूँ कि खूब वो इंटरेस्ट से काम कर रहा है
और खूब अच्छी तरह से काम कर रहा है. In the age of smartphones, Pallav says more than apps, phones must be powerful to be able to handle the applications. It is important that phones do not heat up to give the user the best experience. फ़ोन सबसे पहले तो अच्छा सा एंड्रॉइड ओएस चाहिए, लेटेस्ट एंड्रॉइड चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट होगा एंड्रॉइड स्टूडियो से. तो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ वो पेयर होना चाहिए. अगर एंड्रॉइड 12 माइनस होगा तो ये पेयर ही नहीं होगा, वायरलेस, आपको वायर लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो फ़ोन का ओएस लेटेस्ट होना चाहिए, प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बन के कंप्यूटर में तो फ़ोन में आ जाएगी, फ़ोन ही स्लो होगा तो एप्लीकेशन इंस्टॉल में बहुत देर लग जाएगी. वो आपको टेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर. तो आपको प्रोसेसर का स्पीड में होगा तो जल्दी जल्दी ऐप इंस्टॉल होगा, आपको जल्दी प्रीव्यू दे देगी आपको वहाँ पे ही. But it's not a cakewalk to develop applications for Android. Pallav tells us about the many parameters through which he must run the apps before launching them. सबसे पहले तो एप्लीकेशन हो गई तो वो कैसे चलती है, डिफरेंट स्क्रीन साइज़ में. अगर ये छोटा फ़ोन है, जैसे टैबलेट हो गया या पीसी हो गया या वॉच हो गई, आप जिससे भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको सबको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये स्क्रीन में कैसा चल रहा है, ये स्क्रीन में कैसा चल रहा है. फिर वो अगर पीसी में कुछ चलेगा कोई एंड्रॉइड एनवायरनमेंट में तो वो कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, अगर आपसे लैंडस्केप में करेंगे तो कैसा स्क्रीन आएगी. या फिर अगर आप अगर फ़ोन बहुत ही वो कहता है कि वो सस्ता या 10,000 या 15,000 का फ़ोन, तो उसमें कैसा चलेगा, 5,000 का तो कैसा चलेगा, अगर फ़ोन स्पीड कम होगी तो कैसा चलेगा. फिर देखिए स्क्रीन क्वालिटी कैसी है, लाइक फ़ोन अभी डार्क मोड में या लाइट मोड में है तो वहाँ पर कैसा चलेगा. इंटरनेट अगर बहुत ही कम स्पीड में हो तो कैसा चलेगा. वो सब पैरामीटर्स में चेक करने पड़ते हैं बिफोर रिलीज ऑन पब्लिश ऑन प्ले स्टोर. Apart from developing apps as he was passionate about them, he also thought of developing apps that were free to the user and easy to use. He says that his apps can be used by anyone. In the age of smartphones, our lives are being run by new applications. Everybody needs apps to make their lives easier. And that can be achieved thanks to powerful processors which make sure that the app runs smoothly and the phone does not heat up. This has given rise to a new career opportunity for people like Pallav, who are now developing apps and making the most of this newfound chance. You know, that was fantastic. And I had a fantastic opportunity also to meet up with Pallav and find out more. So hi Pallav, welcome to the show. अच्छा Pallav, शुरू करते हैं. बताइए कितना important है to have a good processor to be able to run and test apps जिस तरीके से आप कर रहे हैं. प्रोसेसर मोबाइल के लिए दिमाग की तरह काम करता है. अगर दिमाग ही स्लो होगा तो फ़ोन ही पूरा धीमा हो जाएगा. ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो हमेशा फास्ट होना चाहिए. तो आपकी जो ऐप डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चेन होगी वो बहुत ही स्पीड में हो जाएगी, वरना आपके जो स्पीड को टेस्टिंग होगा या डेवलपमेंट स्पीड होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी. प्रोसेसर का जो होता है स्पीड वो मेनली 3 पॉइंट्स पर डिफर करता है. एक प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो, नंबर ऑफ कोर ना क्लॉक स्पीड. तो नंबर ऑफ कोर में क्या है कि जितने ज़्यादा कोर्स अवेलेबल होगा आपके प्रोसेसर में उतना ज़्यादा आपका स्पीड में काम करेगा. Great Pallav, thank you so much. Congratulations on this incredible journey. I wish you the best of luck for the future. I also met up with Murali Krishnan B, President Xiaomi India. Thank you so much for joining us on the show. Thanks Rajiv, great to be on the show. Thank you. All right, let me start off by asking you, a powerful performance is what makes for an amazing user experience, something that makes them want to come back to it again and again. Do you think without a good processor, people like Pallav would have been able to develop and test apps on their smartphones itself? A great smartphone experience is like the optimization of multiple factors. For example, the display, the camera, the GPU, the battery, the charging, but it is the processor that orchestrates everything and brings that entire experience together. And it is that power of the processor that has enabled unimaginable innovation. For example, take the case of Pallav. Imagine somebody using their Xiaomi smartphone powered by Qualcomm's Snapdragon processor to actually code and develop Android apps on that phone. That's just unimaginable.
That's the power of technology. Thank you so much for joining us. I hope to catch up with you soon. Thank you. Snapdragon is calling all you Cell Guru fans to join their global community called Snapdragon Insiders. This gives you access to the latest scoop on Snapdragon technology, a chance to connect with the experts behind the scenes, premium experiences, exclusive contests, and so much more. Look, I've been a Snapdragon Insider for very long. You should become one too. All you have to do is follow them on Twitter and Instagram, and I'm showing you the handles right here. Also, give yourself a chance to win a OnePlus smartphone by participating in the NDTV Snapdragon contest at ndtv.com/unleash your dreams.